वी आर इन थाईलैंड एज यू गाइज माइट नो. और कल एक्चुअली वी रीच yesterday, but let that be. Right now we are at the Phi Phi Islands का टूर करने जा रहे हैं. We took कैब फ्रॉम आवर होटल एंड अभी वी आर एट दिस डॉकयार्ड. अब यहाँ पे लाइन लगी है पूरी पीछे. एंड इसके बाद यहाँ से आई थिंक 45 मिनट्स का फेरी राइड है. वील टेक द फेरी एंड वहाँ से वी हैव दिस होल ट्रिप लाइक अ रियली इंटरेस्टिंग प्लान. आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. काफ़ी सारी जगहों पे हम जाने वाले हैं. वी आर इवन गोइंग टू टेक अ डिप इन द सी एंड ऑल्सो गो स्नॉकलिंग एंड अ लॉट ऑफ फन स्टफ. एंड आई एम विथ another 8 to 10 people and I have come here trip leading करते हुए बहुत टाइम बाद. तो मेरे लिए भी थोड़ा सा नर्वस था because I was trip leading. I was guiding these people along, but so far so good and I think today is gonna be very interesting day, so tag along. आज फिर से स्कूबा डाइविंग करने के बाद मैं स्नॉकलिंग करने जा रही हूँ और डर को भगाने के लिए. So I think this is going to be really fun and now let's go. Welcome back to the channel. So before I say anything, I am so sorry I couldn't vlog in Phuket and even in the starting के कराबी के कुछ starting के दिनों में मेरी आवाज़ सब बैठ चुकी है. You can already see, but I will tell you why, because it is important that you know how I came to Thailand actually. So I was actually trip leading with a company called Wonder XO. Group of solo travelers के साथ यहाँ पे आई थी and they were like 9 solo travelers from all over India. So all of them were strangers but they became friends by the end of it and I was one of them. और अभी वो ट्रिप खत्म हो गया and today I have checked in into my hostel finally. So अभी तक तो हम लोग अच्छे रिजॉर्ट्स में, होटल्स में, 5 star 4 star प्रॉपर्टीज़ में रुक रहे थे, which I liked of course, but backpacking is just my thing and I am so happy. I'll tell you why. I'll show you. Basically my dorm, it's a cute little छोटा सा clean, which is the best dorm. The best thing is कि ये 4-seater female dorm था, but I am the only one in this one and I'm so happy. It's like getting a private room at the cost of a hostel, which is just 350 rupees, not baht, 350 rupees. It's called Sleeping Pills. It's actually on the main road on Aonang, this जो road है Aonang beach की, it's on the main road बिल्कुल ही. इनका नीचे cafe भी है. The owner is a lady and everything is just perfect. So ऐसा नहीं है कि और सारे rooms में लोग ही नहीं है, सब में rooms है, but they are following COVID rules, जिसकी वजह से वो हर रूम में सिर्फ 2 लोग को डालना है. एंड जो मेरी रूममेट है या जो भी मतलब आने वाली है, शी इज़ नॉट हेयर येट एंड आई थिंक वो नेक्स्ट 1-2 दिन बाद आएगी, तो तब तक तो मैं चली जाऊँगी प्रोबेबली बिकॉज आई एम हियर जस्ट फॉर 3 nights. So yep, I have the whole room by myself just for 350 bucks and अभी भी people will say oh backpacking कैसे होता है, budget traveling कैसे होता है. अब इससे ज़्यादा clearly तो मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है. नेक्स्ट सो आज का दिन आई केप्ट फॉर थोड़ा सा आराम लेजर के लिए बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग. इतना आवाज़ देख लो, ट्रिप लीडिंग पे ये होता है. सो आई हैव बिन वर्किंग पिछले 6-7 दिनों से. आई हैव बिन हियर फुकेट कराबी में एंड काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था बिकॉज इट वॉज बैक टू बैक ट्रिप्स एवरी सिंगल डे एंड आई हैव सो मच वर्क टू डू. मतलब मेरा
collaborations and some other work I had to do. So आज का दिन I have kept for that. अभी I'll just work थोड़ा सा. It's already 4:30. I'll leave by 5. तो मैं किसी कैफ़े पे बैठ के बाहर काम करूँगी. I'll order some coffee because I'm hungry as well. And then we will go to the beach to watch the sunset. And रात में आके we will see what we'll do. Okay, so yep, right now let's go. Let's work. And I don't know. Let's go. I hate the fact that I look like a complete boiled egg, but we cannot do anything no matter what because इतनी गर्मी है यहाँ पे. I am not going to open my hair anyway no matter what happens. मौसम काफ़ी अच्छा है but it's not अच्छा for my camera because ऊपर बादल लगे हुए हैं, नहीं दिखेगा ऐसे. The weather is really good if I want to take pictures because light है but it's still not very, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम डार्क हो गया. बट अगर पानी गिरा और मेरा कैमरा भीगा तो आई एम गॉन एनीवे. बट या आई डू हैव अ बैग एंड पीपल आर लुकिंग एट मी एंड लविंग इट. आई एम नॉट एट ऑल स्कैर्ड. अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे 7-Eleven. कॉफ़ी लूँगी मैं बिकॉज 7-Eleven की कॉफ़ी यू कैन नॉट कंपेयर इट टू एनी कॉफ़ी एल्स. मतलब स्टारबक्स हो या कुछ भी हो, यू कैन नॉट कंपेयर इट टू एनीथिंग एल्स. I'm going to Starbucks right now. We'll take coffee. Then हम लोग probably we'll go to a beach cafe. Beach के पास कोई cafe होगा तो we'll go there. And then we will sit there and work and watch the sunset. Of course. यहाँ पे दिखा रहे थे यार 7-Eleven but I can't see it. Okay, so I know एक है आगे जाके. We can go and take there. और एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, वैसे तो दिख नहीं रहा है. Okay, let's go there. Okay, I feel much better vlogging solo. अभी तक मेरे साथ इतने सारे लोग थे तो मैं कर ही नहीं पा रही थी. But now that I'm alone, I'm like okay, I can do it.